welcome on. So I'll be doing the next talk of the day, and that is going to be on type hinting in Python. So before we kick off, how many people understand types in general? Do you know what types are? Just show of hands, people who understand what types are in programming languages. Types. Yeah, okay. Types. Data sets, types. I mean, so essentially, when we talk about types, we're talking about your variables having a particular type of value in it, right? So, मेरा अगर variable के अंदर string है, तो उसकी type जो है वो string है. So, effectively, let's kick off with this thing. What is typing, right? So, the whole idea is that we start with the two different ways we can implement typing in a product, in a language, right? So we have many different types of languages. यहाँ पे कितने लोगों ने Java use किया? Show of hands, right? Everyone's used Java, and Java is statically typed. That means for every single variable that you declare, you need to define its type explicitly in the program. So and everybody knows how annoying that is. So कहते हैं यार इसको पता नहीं खुद ही क्यों नहीं चल रहा था मैं यहाँ पे string डाल लूँ तो खुद ही infer कर ले उसको. But Java does not support that. Java makes sure that all the types are defined, and at compile time it makes sure it checks everything and makes sure everything is correct before moving on. A language like Python is slightly different. It's called dynamic typing. Specifically, it's the category and type typing नाम से. The idea basically is that runtime के ऊपर types check होते हैं. तो for example मैंने एक variable लिया उसमें string define कर दी. अब runtime के ऊपर code run हो रहा है तो जो interpreter है वो देखता है वो कहता है अच्छा है यार इसमें string है ठीक है इसकी type string है. दो लाइन बाद मैंने उसके अंदर इंटीजर असाइन कर दिया तो उसने देखा अच्छा है यहाँ पे इंट आ गया इसकी टाइप इंट हो गई है राइट. तो द प्रॉब्लम विद ऑब्वियसली दैट इज कि अगर मैंने एक वेरिएबल में स्ट्रिंग डिफाइन किया फिर उसको इंडिफाइन किया फिर मैंने कोई इसका स्ट्रिंग ऑपरेशन कॉल कर दिया उसके बाद तो इट्स गोना ब्लो अप इन रन टाइम राइट. देयर इज नो वे टू चेक व्हेन आई एम राइटिंग माय कोड कि ये कोड नहीं खराब होगा एंड यू कैन ओनली इमेजिन कि जब कोड बेस बड़ी हो जाती है तो इस तरह के मसले काफी ज्यादा आना शुरू हो जाता है. व्हिच kind of brings us to why do we need typing? कि हमें essentially typing की मकसद क्या है? The typing we understand is essentially defining the types on each variable, right? तो मैं define कर रहा हूँ कि ऐसे ये मेरा string है, ये मेरा variable है, तो parameters के अंदर string में डाल रहा हूँ तो यहाँ पे हमेशा string ही आएगी. This can get a little more complex. Let's say I'm working with objects. तो अगर मैं फॉर बड़े ऑब्जेक्ट्स पास कर रहा हूँ मेरे मॉडल्स हैं तो मॉडल्स के अंदर कौन सी टाइप्स हैं राइट. तो दिस इज एन एग्जांपल जहाँ पे मेरे पास एक पाइथन कोड लिखा हुआ है जिसमें मैं एक प्रोसेस का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ एंड प्रोसेस के फंक्शन के अंदर आई एम पासिंग इट आइटम्स एंड आइटम्स इज अ सीक्वेंस व्हिच इज बीइंग यूज्ड इन अ फॉर लूप. नाउ अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं कि आइटम्स के टाइप क्या है तो राइट नाउ यू डोंट नो यू हैव टू रीड द कोड टू डू दैट. तो हम लोग रीड करते हैं तो उसमें आइटम्स में पता चल रहा है कि यार वो एक सीक्वेंस है बिकॉज़ इट्स बीइंग यूज्ड इन अ फॉर लूप. वी जस्ट लर्न दैट एंड उसके बाद हर आइटम के अंदर देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड वैल्यू एंड उस वैल्यू के अंदर देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड आईडी. ठीक है दैट्स फाइन. The awesome thing about this function is that since this is not statically typed, this is dynamically typed, as long as I have an array, उस array के अंदर item के अंदर value है और ID है मैं उसको पास कर सकता हूँ. It doesn't care कि अगर item के अंदर 50 और properties हैं या 10 और properties हैं या कोई property और नहीं है, right? It could be any type. For example, this could be my user object and my post object and my event object. It's as long as it has an item value ID, it will accept it, right? This is the cool thing about Python. This is the cool thing about dynamic typing. मगर imagine this code X300, right? ये 300 लाइन का कोड होता. That would make it a little bit difficult, right? अगर आप 3 महीने बाद आपके इस कोड को देख रहे हैं, you have no idea कि ऐसे यार इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सेप्टेबल हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं एक्सेप्टेबल हैं. So this becomes tricky then. Or so essentially we have had this problem a lot, which is why we started looking into type hinting and trying to understand how can we start documenting that. So, your first look at Python's type hinting. We'll talk about type hinting specifically later on, but just to give you an idea, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है? We have the same function, but I've introduced some type hinting annotations from Python 3.5, and इसके अंदर मैंने बता दिया कि items is a sequence of items, and it's going to return none. And immediately, now you can see अच्छा हाँ यार items isn't sequence of items. Item क्या है? मैं item की फाइल जाके देखूँगा मुझे पता चल जाएगा. And
I maybe had to write like 5-6 lines additionally to make sure that I've essentially documented this using additional 4-5 lines यहाँ पे. The other ways of documenting, the most popular one being pydocs. यहाँ पे हम लोग उसके अंदर strings लिखते हैं, type blocks के अंदर comments लिखते हैं, उसके अंदर अपने params define करते हैं, which is all very nice जब आप code लिख रहे होते हैं, but mostly what happens is that people forget to update them. तो for example अभी मैंने इसको लिख दिया है, but कल जाकर जब मैं उसका function change करता हूँ तो मैं इसको update नहीं करता, and they're not enforced, right? So enforced नहीं है तो update हुआ नहीं हुआ किसी को नहीं पता, and before you know it they're actually pretty useless. So with this thing you can actually enforce this, तो वो हमेशा check करेगा आपकी types को, and that will effectively make it specific कि अच्छा हाँ यार ये मेरा जो यहाँ पे items है इसके अंदर हमेशा मेरे पास value भी आ रही है और उस value के अंदर ID भी आ रही है, तभी वो कोड चलेगा वरना वो कोड नहीं चलेगा. दूसरी जो चीज़ है that is for testing. यहाँ पे कितना तो टेस्ट लिखते हैं just to get an idea. Okay, yeah, that was kind of expected. Test कौन लिखता है actually? So the basic idea around testing is that people say, and this is general community, कि हमें टाइपिंग की जरूरत ही नहीं है, Python amazing है, हम लोग जो है ना सारे में टेस्ट में कवर कर लेंगे केसेस. अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास स्क्वायर का फंक्शन है, स्क्वायर रूट का फंक्शन हम लोग देख रहे थे, एंड उसके अंदर अगर मैंने स्ट्रिंग पास कर दी तो उसका मैं टेस्ट लिख दूंगा कि जब वो स्ट्रिंग पास हो तो वो एरर एक्सेप्शन थ्रो कर दे, राइट? फाइन. मतलब आप कितने टेस्ट लिखेंगे इस तरह के? आप स्ट्रिंग्स के लिखेंगे, लिस्ट के लिखेंगे, डिक्शनरीज के लिखेंगे, जनरेटर्स के लिखेंगे, आई मीन सो ऑन सो फॉर्थ. व्हाई वेस्ट टाइम? So if you look at this space, this is a space of your test cases effectively. अगर लेफ्ट पे आप assume करें आपके पास हैं सारे different possible parameters जो आपके फंक्शन कॉल के, और ऊपर जो है possible values जो आप इस फंक्शन को दे सकते हैं. So you create a space like this, and when you test with one value, for example, मेरा square root का function है और उसमें मैं square root of 2 कॉल करता हूँ, तो that's my one test case इस पूरे space के अंदर. अब इसके अंदर मुझे जब मैं types को introduce करता हूँ तो उससे मेरे पास एक बहुत बड़ा चंक बाहर निकल जाता है, राइट? हमें ये पता है कि जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो तो जा ही सकती है इस फंक्शन में क्योंकि वो पहले से रुक जाएंगी, ठीक है? एंड दैट इज इफेक्टिवली द यूज ऑफ टाइपिंग कि मैं अपने बहुत बड़े ब्लॉक्स को हमेशा से निकाल देता हूँ, एंड देन जो छोटा सा पीस एंड में रहता है उसके अंदर फिर मैं स्पेसिफिक वैल्यूज का जाकर चेक कर सकता हूँ कि हाँ मेरी जो टेस्टिंग है उसमें मेरे साइट्स ने क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं या नहीं. सो टाइपिंग्स आर एक्चुअली यूजफुल व्हेन इट कम्स टू राइटिंग टेस्ट्स. So let's talk about type hinting in Python. एक तो let's clarify the word type hinting. ये इसको typing क्यों नहीं कह रहे? इसको सिर्फ static typing क्यों नहीं कह रहे? ये type hinting क्या चीज़ है? So type hinting is literally what it says. Hint का मतलब होता है एक hint देना, right? कोई hint होती है ना, आप hint मांगते हैं कई बार, तो and that's basically it. These types are not enforced by Python. तो अगर मैं जो पीछे कोड लिखा हुआ था, या यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर रूट लिखता हूँ और फिर नीचे मैं इसको स्ट्रिंग के साथ कॉल करता हूँ तो पाइथन को एरर नहीं देगा मुझे इस टाइप रन कंपाइल इनिशियलाइज होने पे मुझे एरर नहीं देगा, ये वैलिड पाइथन कोड है. बट ओनली व्हेन इट रन्स एंड यू पास इन एंड एक्चुअली वो रन भी हो जाएगा इस केस में, आई थिंक, क्योंकि वो स्ट्रिंग के ऊपर रन होते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स, राइट? तो वो रन भी हो जाएगा आपका कोड बिकॉज अगेन पाइथन डज नॉट रिस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम यूजिंग एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर ऑन स्ट्रिंग्स. तो the point of type hinting is effectively जो हमने दो चीजें पीछे बात की हैं. One was documentation, दूसरी was testing. How do you enforce testing अगर Python enforce नहीं कर रहा उसको? तो for that we actually have to introduce some other libraries जो उसको statically build type checking करती हैं हमारे run time हमारे code time के ऊपर. हम लोग development कर रहे होते हैं तो हम लोग ये libraries को use करते हैं और इससे हम लोग ensure करते हैं कि जो हमने यहाँ पे types लिखी हैं वो actually meet हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. तो उसमें इस पर्टिकुलर केस में let's say I'm going to run it using 3 different parameters और इसको जब मैं यहाँ पे एक टूल है उसका नाम है MyPy. This is one of the most popular tools when it comes to static type checking in Python. और इसके साथ this is built by GitHub और इस तरह की एक और लाइब्रेरी Facebook की भी है. तो इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ and then I run it on this file that I've created. Simple function है तो उसने मुझे फॉर्म मुझे एरर्स दे दिए. उसने कहा यार आप जो है ना लाइन 5 के ऊपर स्ट्रिंग पास करने की कोशिश कर रहे हैं इस फंक्शन को, ये फंक्शन जो था इसके ऊपर टाइप हिंट जो है वो इंट की रखी हुई है, तो दैट मींस यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू चेक दैट. लाइकवाइज अगर आप उसको जो दूसरी वाली लाइन थी हमारी, इसमें मैं एक इंट को ये इंट रिटर्न कर रहा है और मैं इसको स्ट्रिंग के साथ अपेंड करने की कोशिश कर रहा था,
Again, Python में this will work fine, guarantee देगा, मगर is that really what we want? That is the whole point of type ending, and that's where it comes in. वो आपको एक error देता है, कहते हैं यार ये जो आप plus करना चाह रहे हैं, these are incompatible types, and that's going to cause problems for you. So you have to make sure that you fix it before you move on. So let's look at a few other things that are related to type hinting within the type hinting framework. Also, एक बहुत important चीज़ है that is called type inference. Type inference is something that's very useful. Inference, infer का मतलब होता है कि किसी और चीज़ को देख के उससे type understand कर लेना. And this is something that ये अगर हम लोग concepts को देखें, strongly typed या weakly typed languages होती हैं, वो एक अलग पूरी session हो सकता है उसके ऊपर. But effectively, the idea basically is कि मैंने यहाँ पे दो parameters define किए हैं, width और height के, उन दोनों को integers define किए हैं. नीचे जब मैंने self dot width and height define किए, तो मैंने इसकी types define नहीं किए हैं, but it inferred the types from the original parameters. अब जब मैंने ये function नीचे लिखा, this is a class function normal, और मैं इसके अंदर यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये return कर रहा है couple of string and string. मगर मैं return क्या कर रहा हूँ? Self dot width and self dot height. Now it has inferred कि self dot width and self dot height is actually an integer. तो वो यहाँ पे मुझे error दे देगा, वो कहेगा sorry, यहाँ पे आप integer, यहाँ पे आपकी types गलत defined है, यहाँ पे आपको couple of int return करना है. This is not string and string. ठीक है? This is your basic type inference. Type inference का सबसे जो फायदा है, बड़ा फायदा ये है कि you don't have to add typing to every single variable in your code. So you can still keep your code base relatively clean. अगर आपने सिर्फ function parameters को और high level class objectives को अब define कर देते हैं, the rest gets inferred automatically and it works very nicely. This is another example where type inference is being used. मैंने यहाँ पे एक list initialize की है, जिसको मैंने कोई typing दी नहीं है, और मैंने इसके दो items सिर्फ डाले, photo object के. मगर जैसे मैंने उसमें photos में एक string append करने की कोशिश की, उसने मुझे error दे दिया कि sorry this is not allowed. And why is that? Because it inferred कि अगर मैं इसमें दो photos के object डाल दिए, इस list में मैंने photos की object ही डालनी है, और अगर मैं string डाल रहा हूँ तो I'm probably doing something wrong and I should be told of that. तो उसके अंदर उसने मुझे एक error दे दिया यहाँ पे. एक interesting concept है हमारे पास typing के अंदर which is called union, and ये usually तब आता है हमारे पास जब we want to return or assign multiple types to a particular variable. Now this is obviously very common और ये सारी languages के अंदर support होती है इसकी. इसके अंदर हमारे पास union के अंदर हम यहाँ पे union के साथ दो types define करते हैं and वो फिर दोनों types accept करता है. तो यहाँ पे अगर for example normally जब मैं एक database से कुछ चीज़ fetch कर रहा होता हूँ, तो मेरे पास या तो मैं एक object return करूँगा या मैं कुछ return नहीं करूँगा, i.e. none return करूँगा. तो यहाँ पे मैं union of foo and none return कर सकता हूँ. Now this is such a common use case. Obviously your database हर कोई retrieve कर रहा होता है, कि इन्होंने इसके लिए एक special keyword बना दिया optional के नाम से. Optional means union of whatever you pass and none. ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता. इसका disadvantage ये है कि अब जब भी मैं option कहीं भी किसी method के अंदर use करूँगा, तो वो मुझे इसके साथ जाके check लगाना पड़ेगा कि मैंने none return किया है या मैंने object return किया है. फिर अगर मैं वो चेक नहीं लाऊंगा तो वो फिर वापस कंप्लेन करेगा जो हमारा ये माइपाई की लाइब्रेरी है, वो कहेगी कि यार सॉरी आपने यहाँ पे ये तो या फू हो सकता है या नन हो सकता है, तो मुझे नहीं पता यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या चीज़ है. यू हैव टू स्पेसिफिकली टाइप कास्ट द वेरिएबल व्हेन यू रिटर्न द ऑब्जेक्ट. तो हाउ कैन वी सॉल्व दैट? तो वी कैन सॉल्व दैट बाय यूजिंग समथिंग कॉल्ड फंक्शन ओवरलोड, जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली बता सकते हैं उसको कि अगर मैं इसको कोई इंटीजर पास कर रहा हूँ तो वो स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट पास करे, अगर मैं नन पास कर रहा हूँ तो वो नन रिटर्न करेगा. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि पाइथन के अंदर जो ऊपर दो फंक्शंस लिखे हुए हैं ओवरलोड के सिंटैक्स के साथ, these are not actually executed, these are just references for your mypy library. वो ये एडिशनल मेटाडेटा है जो लाइब्रेरी को बता रहा है कि अगर मैं int पास कर रहा हूँ तभी ऑब्जेक्ट आएगा वरना ऑब्जेक्ट नहीं आएगा. एंड इफेक्टिवली व्हाट दिस अलाउज यू टू डू इज you don't have to add any additional checks when you return from the library. अगर वो int पास करेगा उसको ऑटोमेटिकली पता है कि इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और जब none पास होगा तो ऑटोमेटिकली none रिटर्न होगा. And finally जो another very popular concept when you talk about types is generics. Generics के अंदर क्या होता है
Usually when I have something like a collection, I need to define कि उस पूरे collection के अंदर क्या चीज़ जा रही है, and you usually denote that by using square braces, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, और if you look at the first example, numbers is a list of int, इसका मतलब इस list में सिर्फ integers होंगे. Now again, Python does not limit you. Python कहते हैं आप list में जो चीज़ डालना चाहें डालें, but when you're writing big production level applications, you might not want to do that. So at some point, yes, you can उसमें आप वहाँ पे multiple types डाल सकते हैं, आपके int के strings हो सकते हैं या कोई भी चीज़ हो सकती है, but normally you want to well define कि इस list में क्या चीज़ होगी, वरना you are bound to run into issues down the road. So इसी तरह you can see, you can also define them for dictionaries, you can also define them for specific classes, and so on and so forth. So just to cover up all the things, we've learned how to annotate our function signatures, which actually help us type hint everything. So we have learned how to annotate variables, and you only have to do this if you need to. When I was out there in Furojang, we have understood unions and optionals. So obviously we should not be using all the time, or jitna hum kab use kar sake utna behtar hai. And we obviously we talked about more technical stuff, which makes the type checker smarter, the overloads and generics. जो आखिरी सवाल रह जाता है, जो यहाँ पे सब लोग सोच रहे हैं कि यार अच्छा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मगर जो डायनामिक लैंग्वेज सारे मजे थे वो तो आपने खत्म कर दिए हैं. अब मैं जाके जावा यूज़ कर लेता हूँ, तो मैंने सारी टाइप चेक यूज़ करनी है. तो the thing is that one, this is not static type check because again you have still Python running, although dynamic is still. So you can disable your type checker in specific instances, and you can use something. You have specific types called any, जिसमें आप any define कर देंगे तो वो किसी को भी accept कर लेगा, right? So these are what you call escape hatches. जब आपको पता है कि यार यहाँ पे मुझे use नहीं करना कुछ भी, यहाँ पे types do not matter. For example, इसका बहुत check use case बनता है, मैं एक render का function लिख रहा हूँ, right? अब render function is a generic function. It can take anything, right? Like वो किसी तरह का page ले सकता है. So I don't want to care about कैसे कौन सी type ले रहा है. So in that case, what I will do is I will simply define anything over there. Or मेरे पास यहाँ पे एक file है जिसमें बहुत सारी types हैं जो I don't care about them. I can ignore the file or the line or whatever or the function, right? So you have all of these things already built into MyPy, so that you don't get hindered when you start using it. And these are some of the documentation. So obviously starting with the MyPy documentation itself, some of the things that are introduced. So type hinting was introduced in Python 3.5. So you need to be using at least 3.5 plus in order to use this. And I think that is it from my side.